পৰৱৰ্তী বাতৰি দেশত মাতৃভাষাত আৰম্ভ হ'ল চিকিৎসা শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষা দেওবাৰে মধ্যপ্ৰদেশত এই প্ৰক্ৰিয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে কয় যে মাতৃভাষাত শিক্ষাদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'লেহে বিশ্বৰ ভিতৰত অগ্ৰণী হৈ পৰিব দেশৰ শিক্ষাৰ্থী মাতৃভাষাত চিকিৎসা শিক্ষাৰ শুভাৰম্ভণি মধ্যপ্ৰদেশত আৰম্ভ হ'ল হিন্দীত চিকিৎসা আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে মধ্যপ্ৰদেশত ইয়াৰ শুভাৰম্ভণি ঘটাই কয় आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে দ্ব্যৰ্থহীন ভাষাৰে কয় যে চিন্তাৰ প্ৰক্ৰিয়া মাতৃভাষাতে আৰম্ভ হয় সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাতৃভাষাত চিকিৎসা আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने मां की भाषा में ही होती है अपनी मातृभाषा में ही होती है इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है तो वो उसके दिमाग में जाती है मतलब अंग्रेजी आती है कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी अगर आप उसकी भाषा में मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ আশা মাতৃভাষাত শিক্ষাদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'লে দেশৰ শিক্ষাৰ্থী বিশ্বৰ ভিতৰত অগ্ৰণী হৈ পৰিব अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे দাদাভাই নৰজিয়ে 19 শতিকাতে ব্ৰিটিছৰ ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ থিয়ৰীৰ বিষয়ে ৰাইজক সচেতন কৰি তুলিছিল তাৰ পিছত একেটা চক্ৰই ইংৰাজীত শিক্ষা দি আৰম্ভ কৰিছিল ব্ৰেইন ড্ৰেইন কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে মাতৃভাষাত শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে ব্ৰেইন গেইনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ा अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थ्योरी को ब्रेन गेन थ्योरी में बदल रहे हैं आपका दिमाग इस देश के लिए है पूरे विश्व के लिए है और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर कर आपकी चिंतन की क्षमता को आपकी तर्क की क्षमता को अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे দেশৰ যুৱশক্তিক নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি থকা নিচাত্মিকাবোধৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় देश भर के युवाओं का आह्वान करने चाहता हूं कि भाषा की ये लघु ग्रंथि से आप बाहर आ जाए लैंग्वेज के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सहन करने की जरूरत नहीं है पालने की जरूरत नहीं है इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है अपनी भाषाओं में आप आपकी क्षमताओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ এনে নীতিৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম ইংৰাজী কৰিছে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট नेल्सन मंडेला ने कहा সত্ৰপীঠ